Third is the cyber emergency response team. And very recently, Pakistan has established its first ever national cyber emergency response team. I'm the director of capacity building, and I've been talking about national in the later half of the presentation. I just wanted to give you a brief overview. So let's just kickstart things with the main crux of my. Okay. So organizational level पे exploitation होती है, and then there's this exploitation at individual level, right? But even if you go and look into the organizational exploitation, most of the exploitation is triggered from the human side. Human is the very important aspect of exploitation. देखो यहाँ पे जो आपकी business vulnerability अगर होती है, most of them are driven by human aspect. So the most important thing here is that human is the weakest link, right? Dushnair is a very popular mentor and guru of cybersecurity. He says that amateurs hack into systems, professionals hack into humans. Human को hack करने को क्या कहता है? किसी को idea? Social engineering. Social engineering is the art to hack into humans, right? Humans are the low-hanging because remember that humans are the biggest asset when it comes to any organization, but at the same point of time, they're the weakest link in an organizational security structure. And there are so many aspects which can actually compromise it. So let's just, आपको पता ना जैसे अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो vulnerabilities होती हैं सिस्टम के अंदर. तो अगर हम लोग एक लैपटॉप की बात करें, what could be the different levels of vulnerability that exist in a system? Anyone? एक सिस्टम में किस लेवल पे vulnerability? ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हो सकती है, एप्लीकेशन लेवल पे हो सकती है, हार्डवेयर लेवल पे हो सकती है. इसी तरह हाँ जी, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन कोई आइडिया है? Anyone who would like to name some vulnerabilities in humans? Okay, great. और हाँ? Rage, okay, great. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम सामने, are you available online? ये सारी वो vulnerabilities हैं जो humans के अंदर exist. Walaikum Assalam, sir. Yes, I'm And I available. believe if we look deep down inside us, we see a lot of things सामने, existing first of all, us as well. we are And all of these vulnerabilities thankful can easily be compromised. and it is very informative. It was very As a matter of fact, जब हम cyber security की बात करते हैं, informative the session. only attack I have a question that has a that 100% we have success diabetics, rate is invasive technology social media. by the blood. 100%. So if you do the We research can well and you know the person and you diagnose have that. done the reconnaissance And then part we of have it, now you can easily non-invasive breach it. technologies Let's already look in at the dilemma. place. कि problem कहाँ है? I supervise some work This as is the well on cyber that. security circle. So मैं how मतलब ये बहुत पुराने you differentiate the बात कर रहा हूँ, simple this is still diagnosis of very relevant. diabetics with the TR? एक तरफ functionality है, एक तरफ It will ease be of use है और एक helpful तरफ that security. all बीच में diabetic एक ball. patients will This eventually ball get the generally for regulation us in is the somewhere retina, between or functionality and ease of use is there some specific furthest from security. हमारे लिए security इतना कोई concern नहीं होता. A ball is diabetic probably like patients who are somewhere going to get between that problem? functionality and ease of use. Because the more you move the ball towards security, the further it's going to move away from functionality and ease of use. ये बात समझ आई किसी को? Example लेते हैं. Did you get my question? Yes, sir. Voice was little unclear, but जितनी मुझे समझ में आई है, मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से ही हमारे ऑटोमेटेड मेथड्स जो हैं वो आए हैं. थोड़ा सा quickly, मैं थोड़ा सा उसको क्विकली जी सर, डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते जी कर दें. थैंक यू. कोई जब प्रोजेक्ट करना हो, कोई पेन टेस्टिंग असाइनमेंट हो, कोई रिकॉन करना हो, तो मैं रिपीट कर पीएम बना के रखिए. नॉर्मल जो हमारी डायग्नोसिस है डायबिटिस के जो हमारा तरीकाकार है, तो ये नहीं है कि हर डायबिटिस पेशेंट लेटर ऑन स्टेजेस पर उसका रेटिना मुतासिर होगा कि इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटिक्स. अब ये बात समझ आई? कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो आई साइट पर ज्यादा असर कर रहे होंगे कि हमारी सिंपल जो हम डायग्नोसिस करते हैं कि वो एनएफओ. सर सिंपल डायग्नोसिस जो है वो इनफ नहीं है, क्योंकि हमें ना सिम्टम्स जो है उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं. जिस तरह मैंने स्लाइड्स में भी बात की थी, नॉर्मल के बाद जो है माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर आता है, फिर प्रोलिफरेटिव आता है.
तो इनाम सुना ये हुआ है अब सबने? इतना जो है बढ़ क्या रहा है, होता है? तो हमें जो है वो स्टेज वाइज़ जो है इतना होना चाहिए हमारा डीप लर्निंग का ओके, मॉडल कि वो ऑटोमेटिक जो है वो बता सके कि ओके। स्टेज फिशिंग कौन-सी है। होता क्या है तो जनरली? हम उसके मुताबिक जो है वो अर्ली एनीवन? ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकें। Okay. सॉरी? So I will transfer the mic to हाँ, Professor Dr. अच्छा, Majisa, who is गुड, गुड। also co-chairing इसके the मोड्स session, क्या-क्या होते हैं? to conclude the session. श्योर सर। ऐसा तरीका it's a by the way it's more of साइबर क्राइम की आप Thank you very much, उसमें आए ना Ms. कैटेगरी Amna, for में, being the तो part of इट this कम्स conference. अंडर स्कैमिंग। Uh, स्कैम के क्राइम के अंदर आता है। आपने अपनी होता क्या है कि प्रेजेंटेशन के आप दौरान हमें लूरिंग बताया करते हैं कि अपने आपका विक्टिम को ये टू जो गिव हिम डायबिटिक इंफॉर्मेशन और टू गिव रेटिनोपैथी हिम है, सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जी अबाउट यू सर। थ्रू डिफरेंट पाकिस्तान मींस। इट कुड बी थ्रू उन टेक्स्ट रीजन्स में है मैसेजेस, जहाँ पे सारी इट स्टडी कुड के बी थ्रू दौरान ईमेल्स, इट कुड बी थ्रू कुछ फोन ऐसा कॉल्स। भी फाइंड किया क्या कि कभी जिसकी किसी का इत्तेफाक हुआ है बेसिस पे आप कह to come सकें कि across any phishing ये जो campaign or इतना any ग्रोइंग phishing रेट है, attack? Has इसकी anyone ever रूट come काज across क्या हो सकती this? है, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दैट Let's have a पर्टिकुलर show of रूट hands. काज? Come on. यस सर, इट वाज़ Show of hands, guys. नेशनल सर्वे रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसकी जो ख़ास Okay. वजह थी ना I ये see a lot of people कि who have come across phishing एज attacks. वाइज़ जो है So उन्होंने very निकाली हुई quickly. थी। अच्छा, by तो the वो way, हाइपरटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेन कॉज़ आ रहा था show of hands जिन शुगर के लोगों साथ, को लगता है कि कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और फिर उनको हाइपरटेंशन भी है साथ में, तो उसमें जो है डायबिटिक I'm more रेटिनोपैथी जो है interested in उन those people पेशेंट्स who में are जो है वो up सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा उन्होंने एज वाइज़ भी let's बताया हुआ था study what कि is the phishing attack 25 टू होता है 45 जो है कितने वो लोग ज़रा किसी के साथ ज़्यादा phishing है। campaign फिर और self जिनको referred ऐसा भी था जिनको जेनेटिकली जो है वो आपको आप सबने पता है वो आई short में anyone डिज़ीज़ else? हो, जिसे हम मोतिया भी कहते हैं, तो उन उसकी वजह से भी जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो आ सकती है। Benazir income support, asthma के माय बाद वॉइस इज़ क्लियर? चीको पाकिस्तान में आई थिंक इट्स अ काफी लिटिल चला है। इंटरप्शन। वीडियो हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो लोगों को ना कॉन्शियस होना पड़ता है कि ऐसे मैसेजेस में ये स्कैम मैसेज। बट गेस व्हाट, आई कम अक्रॉस आई पे एफआई है जो कि अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है। पीपल हैव गिवन अवे 40 लाख 50 लाख ऑन दीस। तो लाइक पढ़े लिखे लोगों की बात करो, जो गांव देहात के अंदर लोग हैं उन्होंने बेचारों ने अपनी प्रॉपर्टियां सेल करने के लिए क्या किया, पर कोई विरोध नहीं। But the point here is that these scams are so is attack vector ka success ratio is so high versus if you want to compromise an operating system vulnerability, a remote procedure call and get into a system, it's much more easier to compromise the human aspect. अभी अगर आपको human vulnerabilities दिखाई थी ना, those are so easy to compromise and get into the system, right? So these are different phishing attacks. और होता कैसे है, तरीके से होता है, होता ये है कि आपके पास spoofing, phishing tags along with something which is known as spoofing. Spoofing क्या है? Spoofing ये होता है क्या? For example, अगर मैं for example डॉक्टर उस्मान को एक ईमेल आती है कैन की तरफ से, तो probably going to be a little precautious कि यार ये कैन स्मिथ में yes, अगर वो फर्म की तरफ से ईमेल आ रही है, friends, what are the chances that he's going to open up that? Imagine कि अगर मैं और रिसर्च करूं और मुझे पता चल जाए कि उस्मान जो है वो वर्क कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके अंदर कुछ लैपटॉप्स हमने प्रोक्योर करने हैं, और मैं वेंडर की तरफ से ईमेल स्पूफ करके एक पीडीएफ भेजूं कि ये कोटेशंस हैं, उस इनवॉइस है, तो क्या चांसेस हैं कि वो खोलेंगे? 200%, right? And that PDF could be malware embedded and that could trigger an attack and that could get compromised. इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा जब हम APTs की बात करते हैं। But ये आपका एक पूरा threat landscape vector। So just opening that email up or just sort of clicking on that could make or end up in compromisation. And these are different ways. Emails with malicious links, emails with asking for confidential data, email asking for bank. But spoofing is very, very important. Just remember this part. अभी थोड़ा आगे इसके ऊपर बात करता हूँ। ये एक टिपिकल अटैक वेक्टर है, इसको आप खुद देख सकते हो, इसको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये वही है जो कि मैंने डॉक्टर उस्मान के साथ आपको पूरा एक अटैक वेक्टर एक्सप्लेन किया।
So the हम अब success PhD ratio पेड PhD ले is रहे हैं, just अच्छा तो multiplied पे करेंगे। by multiples एक प्रोजेक्ट मेरा once you UAE के have साथ हो गया, एक emails. NRPU हो emails में गया, होता है कि आपको पता चलता है तो कि this is something. So अब for ये है example, कि me जरा and Saurabh बच्चों को are very good मोटिवेट friends. करके तो जब अगर उनकी तरफ से मुझे email आएगी, I'm just going to blindly open up trust. अभी आपको थोड़ी देर में बताया था ना, trust is also a very important human vulnerability which gets compromised all the time. co-authors in तो our spoofing research attacks में paper, किस तरह के which attacks? was very marketing, दोनों and एक जैसे लग then रहे हैं. But guess what? from the university Islamabad The and URLs Dr. Park are going to be different. from the एक university टेक्निक होती है, उसका Islamabad. नाम होता है So my URL topic is part tracking and obstacle avoidance control for autonomous vehicles ऑब्फस्केशन क्या होती है? using deep आप reinforcement learning. इंस्टाग्राम जैसा These दिखता are है, some outlines. अमूमन इस तरह होता नहीं है. अगर आप अपने So ब्राउज़र the के ऊपर problem खुद से जाके if you open up in training instagram.com autonomous because you open vehicle it up is yourself. that we have to But choose a if you algorithm open that gives a instagram.com proper a balance link between exploration from a and WhatsApp message, उसमें exploitation, आपके पास and वेबसाइट ऐसी ही the होगी जो बिल्कुल algorithm दिखने में that are इंस्टाग्राम being जैसी है. trained But on guess model what? based, The credentials the that they're going to algorithms input in are here are model going to be based, harvested by and their algorithm and are and going they to be are misused more or inclined personality toward things could be done like statistic that. learning. इसके They don't बहुत give सिंपलिस्टिक very तरीके भी good हैं, कुछ result एडवांस on तरीके भी. मैं दोनों के unpredicted बारे में थोड़ा थोड़ा सा environments बात करता and हूँ. situations ये that आपको नजर other आ रहा होगा फेसबुक और ये फेसबुक. इसमें this एक ब्लर situation नजर आ रहा है because तो in different formats मैंने when क्या छोटा a सा call उसका is करें. being loaded, So this is this like very can simple, happen very something unpredictable which is situation. easily identifiable. You can So simply an relate to that. algorithm Book should can do it. be Be a little more the model should इसको be कहते हैं look like it. capable enough to deal any kind और of ये बड़ा situation. सिंपल होता है. I don't know, आप कंप्यूटर And के also लोगों को तो आपको पता है कि अगर आप the किसी भी problem in वेबसाइट के ऊपर model जाते based हैं उसका learning सोर्स is कोड that कॉपी करके they उसको should दोबारा be से relatable in format. The tool should need to be as long as already you defined put in before those credentials, the you training of the can model. harvest So those basically, email addresses and IDs and then in use. our But autonomous vehicle इसमें so आसानी ये है कि you will details actually over have to this see these from the URL slides. So that there is something we fishy out see there. from one that Let me show you in something very interesting. 2020 Desh इन दोनों में he trained autonomous vehicle or model controller, and then in 2021 Jan, he trained autonomous vehicles. He combined PPO proximal policy optimization with combination of यहाँ पे conventional कुछ flow advanced control. techniques हैं. And then know that there are people from in 2022, you can get to relate with Trump things. he proposed an algorithm based on deep reinforcement learning, but basically using multi-agent reinforcement learning, and it was more inclined for participant avoidance, or you can say tools. In creating there are preferences are possible roles. And then in 2023, Yang he proposed a robust game-changing algorithm. He proposed a method in which adversarial reinforcement learning approach was used. And then in 2023, they all proposed a multi-input autonomous driving algorithm based on deep reinforcement learning, and it was actually used double bias experiment here, in which it was taking more on the side of he was collecting more positive. So if it flashes onto your got no spelling mistake, it's got nothing because he made A to have to do something. The car agent, So this is actually not the A, but this is the on actual our This is simulated technically environment. actually और मुश्किल. Right. So if you have like something like really good, इसके prevention measures के ऊपर आपके पास बड़े अच्छे advanced किस्म के platforms हैं, URL validation platforms हैं, spoofing detection solutions हैं. So there are things out there. लेकिन just talk about you and me. हमारे पास अपने laptop के ऊपर जो करके इस्तेमाल कर रहे हैं, even for workplace. Do we have any spoofing detection mechanisms? Do we have any URL validation process? No, we don't. अच्छा, tiny URLs का नाम सुना ना तुम लोगों ने? क्या होता है? शॉर्टकट्स. तो शॉर्टकट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मुझे बीबीसी का एक आर्टिकल बड़ा पसंद आया, उसका बहुत बड़ा सा लिंक था, तो मैंने उसको tiny URL में डाला, URL शॉर्टकट में डाला, उससे जो URL जनरेट हुआ मैंने आपको भेज दिया, आप उस पर ट्रस्ट करते हुए खोल देते हो और बीबीसी का आर्टिकल. लेकिन गेस व्हाट, अगर वो कुछ और हो तो वो कुछ और हो जाए. इट कुड बी अ फेक पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम और समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, राइट, व्हिच आई एम श्योर इन व्हाई. इसी तरीके से आपके पास ब्राउज़र वल्नरेबिलिटीज होती हैं. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं और कितने लोग
Apple users. Show of hands, Android. Show of hands, Apple. How many believe which one is better? ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर फिर किसी दिन 1 घंटे का लेक्चर हो. एप्पल बेहतर है या एंड्रॉइड बेहतर है? एप्पल, ये किसने कहा? एप्पल ने नहीं कहा. ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. एप्पल कहेगा कि एप्पल बेहतर है. पर आप लोग यूजर हो एप्पल के या आप लोग यूजर हो एंड्रॉइड के, do you think A is better than B or B is better than A? That's another day, another story, some other day. मैं personally believe करता हूँ, power lies in control. Power lies in customization. Apple doesn't give you that. I personally believe Android. Because Android gives you, और अगर आप मेरी जगह पे हो, I don't know, मेरे बैग में शायद पड़ा हो, I have a phone which is completely rooted Android based. ठीक है, उसके ऊपर काली आप चढ़ा दो, उसके ऊपर कुछ भी कर लो, you can actually, you break barriers, you establish your own security posture. But if you're not sure about that, don't do it. उसके ऊपर अभी मैंने आगे बात करी. Just wait and watch. अच्छा, कितने लोग एप्पल वाले कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं? ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सफारी इस्तेमाल करते हैं और एंड्रॉइड वाले कौन सा इस्तेमाल करते हैं? You use Chrome on Apple. That's why you go. You don't use Safari because Safari is the stock browser. Stock browser comes in with stock vulnerability. So I believe that so many possibilities, and you know, we have explored that, we've seen that. But a lot of stock browsers have a lot of different vulnerabilities, जिनको compromise करके यही attack किया. Or ये attack some other day, maybe if I have the opportunity of coming back to UAT, I will something like that before. So maybe some other time, if I get invited, I'll show you live hacking. I'll show you how you get compromised. We can actually do this right here. I'm not prepared for it right now. But these are things. When SSL is in case, हर वेबसाइट के साथ ताला बंद होता है. SSL client trust, SSL के बहुत attack, starting from SSL replication attacks, SSL stripping attacks, and more. So इन सब चीजों के साथ phishing just goes to another level altogether. And then binding it up with some interesting stories. So how would I make someone open a link? Bind it up with some like MS370 सबको याद है? There was this Malaysian plane that just vanished. Everyone was super excited to know कि इस plane के साथ हुआ क्या है? What happened? उस जमाने में अगर आपके पास Facebook पे ऊपर आता है कि Malaysian plane MS370 has been spotted somewhere near Bermuda Triangle, shocking video released. कितने लोग उस पे क्लिक करेंगे? Most of them. ठीक है? A lot of people. So just bind it up with something which is happening. Bind it up with something people are interested to know. Bind it up with something which is exciting, and you get more audience and you get more victims. Right? Then there are something जिसको हम लोग phishing में भी ना categories होती है, जिसमें मैंने यहाँ पे discuss नहीं किया, लेकिन spear phishing होती है, whaling होती है, इनकी categories होती हैं. तो spear phishing होता है कि सिर्फ आपके लिए, जैसे कि आपकी बैंक की तरफ से आप ही भेजना, आपका OTP जो है वो आपको भेजा गया है, आपका आपके बैंक में भी है, आप इस लिंक पे आपके बैंक वाले स्कैम बहुत ज्यादा हो गए ना. क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ हुआ कुछ ऐसा बैंकिंग वाला? अच्छा, I thought maybe you raised up your hand. Anyone who's come across, I come across so many people. I come across लोगों के बैंकों से पैसे जा रहे हैं. So many people who are actually victim of these banking frauds. OTP, email compromisation, clicking on links, and then what does that result into? It is where your password. And as soon as you have a password or OTP for a banking app, you have complete access of their banking financial system. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके पास phishing नहीं हो रही है. I would not go into all of them, but just kindly read through. इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको लैंग्वेज बड़ा मैटर करता है. आपके बैंक की तरफ से कोई ईमेल आ रही है ना, तो उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक ग्रामर होती है. अमूमन फिशिंग ईमेल्स के अंदर इतनी स्पेसिफिक या उस तरह की लैंग्वेजेस नहीं होती.
एक बात तो हर पे आपने रखी, never click on hyperlinks provided in email. email में अगर hyperlinks आपके पास है तो because they could be compromised, they could be attack vectors and they can be and things like that. Just go through. कोई भी आपको कह रहे हैं कि जी अपग्रेड करते हैं मंदी कॉस्ट के लिए, आप किसी कॉन्टेस्ट में गाड़ी खरीद रहे हैं, whatever, don't follow. Moving on to my favorite topic, another very important aspect, password. ठीक है? ईमानदारी से मुझे बताओ, अगर आपका पासवर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर, raise your hand if your password is right. Any password. We're good friends now, so you can stop keeping secrets. किसी का है यहाँ पे पासवर्ड? किसी का नहीं है? कोई किसी ने यहाँ पे पासवर्ड, ये वाला इसमें से कोई पासवर्ड आप लोग कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? है? वाईफाई का है इसमें से कोई? ठीक है, और कोई? पहले होता था? अच्छा चलो एक बात मान लें, raise your hand if your password has your name in it. हाँ बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, अच्छा सारी विंडोज सभी इस्तेमाल करते हैं, कोई मेरे साथ अपना विंडोज का पासवर्ड शेयर कर, पासवर्ड क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या पासवर्ड है ये मुझे, हाँ तो आवाज नहीं आ रही, 7 कोई और 8986 बट स्ट्रॉन्ग और कोई बस एक बंदी का बताओ, at times you just don't have to hack it through password, you just have to ask for it and people start giving it. क्यों मुझे पासवर्ड बता रहे हो? इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हुआ बीच में बता देते, आपकी सोच है। Whatever the case, just don't give away your password, guys. जी जी बिल्कुल। अच्छा याद रखो कि ह्यूमन वीकनेस क्या है, एक तो प्यार से पूछो लोग पासवर्ड भी दे देते हैं, उसके अलावा हम बहुत सारे, जैसे हमने देखा बहुत से लोगों के नाम है पासवर्ड्स के अंदर, तो हम ना समथिंग व्हिच इज कॉल्ड PII होता क्या होता है? Personally identifiable information. We put in a lot of personally identifiable information as a, जैसे कि हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, समथिंग लाइक दैट, राइट? फिर ईमानदारी से एक और बात मुझे बताओ कि आप लोगों के एक ही पासवर्ड कितने प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल हो रहा होता है? बहुत से। इसको कहते हैं पासवर्ड रीयूजेबिलिटी। तो होता है ना, अब मैं पूछूंगा, तो आपके पास पासवर्ड रीयूजेबिलिटी का अटैक बहुत होता है ना, कि आपका अगर फॉर एग्जांपल तो होता क्या है कि लोग ना इजियर प्लेटफॉर्म लाइक प्रोबब्ली समथिंग लाइक, अगर आप या अगर उसका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ के MITN कर दिया या कुछ, उससे जब पासवर्ड आपके पास आ गया तो उस पासवर्ड को आप हिट एंड ट्राई करोगे, सबसे पहले जीमेल पे ट्राई करो, सबसे पहले फेसबुक पे ट्राई करो, इंस्टा पे ट्राई करो, गेस व्हाट, it works, right? And then you can get access to, so one failed platform can lead to multiple platform compromise. Okay, पासवर्ड नहीं पूछूंगा, देखिए मुझे ये बताओ कि जनरली आप लोगों के पासवर्ड, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फेसबुक का, उसकी लेंथ कितनी? 7 8 5 2 1 क्या? अब कितनी है? 8 मिनिमम का 10 है, 9 है, कितनी है? 15 है, 15 है कंस्ट्रक्शन, और कोई 13 कुछ कम वाले नहीं है अभी 20। हाँ पासवर्ड उसमें मैनेजर है तो उससे, लेकिन ओरिजिनल है उसकी 20 प्लस, ये 20 ये देखिए, how much time would it take for an attacker to hack your password if your password is up? So if you are pretty much over 15, you're safe.
और फिर आपके पास अगर ओनली न्यूमेरिक है, ओनली लोअर केस है, अपर केस, तो हमेशा याद रखो पासवर्ड की बेस्ट विजनिंग ये है कि mix it up. Have some passwords which are alphanumeric, upper lowercase, special characters, things like that, with a length of probably 14 or 15 plus, right? But guess what? ये चीज चेंज हो गई है थोड़ा बहुत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 बिलियन ईयर्स नजर आ रहे हैं या यहाँ पे 34,000 ईयर्स नजर आ रहा है, अब ऐसा रहा नहीं। अब जो लोग काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर उनका एक्सपोजर है, तो अब आपके पास जीपीयू बेस्ड फिर क्लाउड बेस्ड ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इन चीजों को थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी चीज कह रहे हैं ना कि 1000 साल लगे थे तो ये ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कहते हैं ना कि आरएस से ब्रेक नहीं हो सकता, या वो ब्रेक हो सकता है लेकिन अगर 1000 साल में ब्रेक हो गए तो हमारी लाइफ तो इतनी नहीं होती, ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं था। But now with some emerging technology and solutions, things are becoming more of a reality. But just be on the safer side. What do you guys need to do? 14-15 से ऊपर का पासवर्ड with mixing it all. Upper, lower case, special characters, right? ये समझ आ गई सबको? Brilliant. अच्छा, घर पे कितने कितने लोगों के वाईफाई लगा? सभी के लगा हुआ है, कम ऑन। कितने लोगों ने अपना डिफॉल्ट पासवर्ड जो पीटीसेल ने लगाया था या जो भी कंपनी ने लगाया था उसको चेंज नहीं किया? कोई जो लगा के गए थे वही लगा दिए, कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। मैं एक ही बात पूछता हूँ, आपको बार बार करने से ना उसका मतलब खत्म हो जाता है। मुझे ये बताओ कि डिफॉल्ट पासवर्ड जो तुम लोगों का उसमें था, उस डिफॉल्ट पासवर्ड को अगर चेंज नहीं किया हुआ ना तो आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पीटी सेल कितने लोग इस्तेमाल, पीटी सेल का तुम लोग डिफॉल्ट पासवर्ड बताओ क्या, तुमको नहीं बताओ। एडमिन का तो पीटी सेल होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे, जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड अगर चेंज ना करो ना तो अपने एक्सेस पॉइंट को उठा के पीछे देखो उसका मैक एड्रेस लिखो, उसके आखिरी 2 ऑक्टेट्स में वो आपके पास है। आप सिर्फ यहाँ पे ब्राउज़र में बैठे हो, मैंने एक स्कैन रन करना है और मुझे आपका मैक नजर आना है, मैंने उसके आखिरी 2 इफ यू हैव फिर आपके ZTE या आपके पास बेल्जियन उनके डिफॉल्ट पासवर्ड की लिस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो जस्ट हैव टू से बेल्जियन डिफॉल्ट पासवर्ड राउटर मॉडल नंबर सो आता है। इस तरीके से एक अटैक हुआ था आज से तकरीबन कोई 2016 में, किसी को पता है इसका? मिराई के नाम से हुआ था। ये सुना कितने? कंप्यूटर साइंस के लोग दुनिया का सबसे बड़ा डिनायल ऑफ सर्विस, 220 जीबीपीएस का डिनायल ऑफ सर्विस, द बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इट्स कॉल्ड मिराई। और मिराई अटैक क्या हुआ था? इट वाज सिंपल, इसका सोर्स कोड गिटहब के ऊपर अवेलेबल है, जाके देखिए। ये करता क्या है, ये शोडान का नाम सुना होगा तुमने, इसको भी देखना, ये तुम लोगों के लिए हिंट्स है, तो जाके रिसर्च करना, प्रीटी गुड रिसोर्स। तो करता क्या था, शोडान से वो सर्च करता था वाईफाई डिवाइसेस को और उन पे डिफॉल्ट पासवर्ड होता, और इतनी दुनिया में उसको ऐसे मिले वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स default passwords that they use those access points to launch an attack. This is how it works. And guess what? ये वो सारे मुल्क हैं जहां से अटैक वेक्टर्स जनरेट हुए हैं। आपको कहीं पाकिस्तान में बता रहा है, पूरी दुनिया से अटैक पहुंच हुआ, और पाकिस्तान only alone. But there are a lot of places which were in Pakistan. Unfortunately, was one of those countries. जिसके ऊपर से ये attack, and just look at this is how graphically the attack looked like. Very devastating. Think about it. 620 Gbps of traffic being generated. It's like a distributed denial of service. Okay. So closing this part, let's just look at the best practices of passwords. मैं आपको already बता चुका हूँ.
कैरेक्टर लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिक्स इट अप, अगर आपके पास प्रोविजनिंग है, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, डोंट यूज डिक्शनरी वर्ड्स, थिंग्स लाइक दैट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्या, पासवर्ड्स आई लाइक यू टू यूज them daily, you change them periodically, and don't so this is very important, very, very important aspect. Another very important aspect of compromisation are passwords. So let's just move on to another very important element of human hacking, or the weakest link, which is social media. सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो, जनरली पूछ लेता हूँ, यूट्यूब सॉरी फेसबुक पे सब है, लिंक्डइन पे सब है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, राइट, और कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्विटर, ट्विटर पे है आप सब लोग, ओके ग्रेट। अच्छा, इस बात के बारे में आपका क्या ख्याल है? Being on social media, you think there is something as privacy? No. You still are on social media. Why? That's my question. You like to share things. People do actually like to share things. Like anyone wants to share their status. They really want to add friends with people who they don't know. They really want to put up the picture of the food they're having. They want to check into hotels and restaurants that they're going. आप सब लोग करते हो ना? तो, right? इसके नाम सुना आपने? Please rocky.com. ये एक्चुअल वेबसाइट है। ये क्या करती है कि ट्विटर के ऊपर जो लोग घरों पे मौजूद नहीं होते और स्टेटस अपडेट करते हैं ना, तो ये ज्योग्राफिकली उनके घरों को पिन पॉइंट करती है कि आपके घर खाली है, इनको आप रॉक करते हैं। This is actually a plan. Right? That actual platform which actually considers सोशल मीडिया के ऊपर हम तस्वीरें लगाते हैं, सब लगाते हैं अपनी तस्वीरें, उन तस्वीरों का ये नुकसानात हो सकते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू ऑल। सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने खरदून बनना है तो मुश्किल है बनना, ठीक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इफ आई हैव अ पिक्चर ऑफ खरदून, आई कैन इजीली impersonate Facebook profile with Khardun's picture on it. If I have some personal data, it will be more relatable, and I can just simply do ब्लैकमेलिंग। आपकी पिक्चर्स को उठाते हैं, मॉफ करते हैं, हैरेसमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, वेरी कॉमन। या तो जो पिक्चर्स होती है उनके अंदर समथिंग कॉल्ड एज मेटा डेटा। तो अगर आप अपने पिक्चर से कैमरा से फोन से पिक्चर लेते हो, यू गो इनटू मेटा डेटा एक्विजिशन, यू सी दैट उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन से लेके आपके पास किस कैमरे के किस मॉडल से किस जगह पे पिक्चर लेगी, तो सारा डेटा उस डेटा के अंदर है। डेटा वहां से बहुत सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। हम एक हैकर फिर लीकेज ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स, बर्थडे, होम एड्रेसेस। जब आप बैंक को कॉल करते हो तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए वो दो तीन चीजें क्या पूछता है, बताइए, पूछता है आईडी कार्ड नंबर भी पूछता है, ठीक, ये दीजिए, मतलब नहीं आईडी कार्ड। अगर मेरे पास आपकी आईडी कार्ड की कॉपी है जो कि जनरल इंफॉर्मेशन है, तो मेरे पास आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ गई, आईडी कार्ड नंबर भी आ गया। एक चीज जो कहीं पे नहीं होती वो मदद नहीं होता, इस तरह प्लेस ऑफ बर्थ भी वो बीच में ही आता। मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो छुपी रह जाती है बर्थ से, वो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं होता। गेस व्हाट, सोशल मीडिया प्रोफाइल के तो 90% लोगों ने अपनी मदद को तस्वीरों में टैग किया। This is the fact. There you go. There's a lot of leakage of private information. एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, hackers trick facial recognition logins with Facebook photos. This is actual research. I don't know if you have gone through this. आपके पास यहाँ पे Facebook pictures के through facial recognition bypass. This could be a very interesting active research area for you guys if you want. There's कुछ काम इस पे हुआ है और लोगों ने successfully bypass भी किया हुआ है। तो facial recognition in Facebook में. These kind of attacks are actually out there which can compromise the system.
ओके, इस पे आने से पहले मुझे जल्दी से बताओ, फेसबुक के ऊपर तुम लोगों के कितने दोस्त, कितने फ्रेंड्स हैं? 800? हाँ, 345? ओहो, पॉपुलर है। और कोई, क्या नाम है तुम्हारा? सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन? 4500? You're part of the faculty. तीन फेसबुक पे, फेसबुक पे दोस्ती नहीं है, मैं कितने हैं? 1200? गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। हाँ, 100? हाँ, फेसबुक पे कोई क्यों 80? हाँ गाइस, कितने हैं तुम्हारे, कितने हैं? ये लो जैकेट, क्या की इतने? अच्छा, यहाँ पे ही वी हैव अ क्लियर विजन व्हिच इज 4500 के अंदर से तुम एक्चुअली कितने लोगों को जानते हो? मैक्सिमम किसको कहते हैं? 4325? 4000 और इसके अलावा फिर अच्छा, एक बात याद रखो, if you have 4650 friends on Facebook, guess what, maybe 6 of them are real. So even if you map that onto, यार दो किस्म के डाटा, अगर 4000 को जानते हो तो 500 को क्या, देखो शायद आते नहीं, या अगर 1200 है तो उनमें से आप अगर 200 को जानते हो तो 1000 का क्या जिनको आप नहीं जानते? Guess what? We are sharing so much personal information with people who we assume we know, but don't. Right? और फिर guess what? आपके पास impersonation है. You never know कि ये अकाउंट जो है वो उसी बंदे का है या किसी और का है. Right? It seems like it's account of Dr. Ahmed. Probably it's not. There's no validation mechanism, right? Just the picture that you see and you say, okay, this thing का लग रहा है. ये फेसबुक ना बड़ा एक डिफरेंट सा प्लेटफॉर्म है. जब फेसबुक शुरू हुआ था ना, तो उस जमाने में ये आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह चार्ट बीच में तुम, फिर ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फिर ये पूरा इंटायर नेटवर्क है, ये ऑल फेसबुक यूजर्स हैं और ये इंटायर नेटवर्क है. जब फेसबुक शुरू में वो आया था ना, तो प्राइवेसी की वजह से आपके पास ये जो ब्लू में है ना, ये सबको नजर आता था. तो आपको तो सभी नजर आता था, फिर आपका नाम जो है वो आपके फ्रेंड्स को नजर आता था, इंटायर नेटवर्क को नजर आता था और फेसबुक यूजर्स को नजर आता था, आपकी पिक्चर इन सबको नजर आती थी, ब्ला 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 ब्ला. ये अब सबको समझ आ रहा है ना, इस तरह ये था. आज पता है किस तरह? A lot of your information that is on Facebook out, pretty much out there for everyone to explore. And just to make things more exciting and interesting, there are a lot of advanced techniques like crawlers and the techniques which can scrap through Facebook and get meaningful information and data. तो ये सब कुछ वहां पे मौजूद है. और आजकल आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोफाइलिंग करने के लिए इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया. सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग इज द बेस्ट मींस ऑफ प्रोफाइलिंग. So if I want any person, I'm just going to social media and just look at, I get so much information about you. एक जगह पे टॉक दे रहा था तो उससे पहले मुझे पता था ऑडियंस कौन सी है, तो मैंने एक आध पहले उनको प्रोफाइल किया. बस जब बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे ही रैंडमली नाम लिखा, कौन है, वो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ. Only through profiling his social media, I get to know so much about him, how stranger person. So think about it, how can that be used against you? Common personally identifiable information which is out there can be very, very categorically be used against you. For example, ये सारी आपकी पर्सनल, जैसे आपकी पिक्चर, आपका बर्थ प्लेस, अभी आपको मैंने थोड़ी एग्जांपल्स दी हैं, राइट? वो सारी एग्जांपल्स क्या थी? आपका डेटा ही आपके पासवर्ड्स है, आपका डेटा ही आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, आपकी मदर नेम ही आपका वैलिडेशन मैकेनिज्म है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में पड़ी हुई है, तो देयर इज न्यू सिक्योरिटी, राइट? इस सबसे आसान तरीका भी मैंने थोड़ी देर पहले खलदूम की एग्जांपल दी है. इंपर्सनेशन, किसी की तस्वीर उठाओ, अकाउंट बना लो, इंपर्सनेट.
अच्छा, तुम सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर हो, let's look at this. Anyone friends with this girl? Or today? Anyone friends with this girl? Anyone from the girls? No one friends with this girl? Good for you. She does not exist. This was an experiment which is called the Robinson experiment. एक 28 दिन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई गई थी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई गई थी एक लड़की की पिक्चर चिपका के, और कहा था कि ये लड़की जो है ये साइबर थ्रेट एनालिस्ट है. This fake profile was able to establish 300 connections, including people from the National Security Agency, DoD, and international companies. She was offered job from Google and Lockheed Martin. This profile was able to harvest email addresses, bank account details, and location of some secret military units. And guess what? सारी profiles पे लिखा इस लड़की की उम्र 25 साल है, ये MIT ग्रेजुएट है और 10 साल का एक्सपीरियंस. Honestly, this was part of the experiment. 25 साल की लड़की जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल में MIT से ग्रेजुएट भी हो गई, देख तो नहीं हुआ. Guess what? Not people like you and me, people like Google, Lockheed Martin, NSA, DoD fell for this trap. They fell for the face instead of facts. So this is the power of. हमने 6 में MCS में से वोट बना. इस तरह की खबरें तो तुम लोगों को रोज ही नजर आती होंगी. गूगल प्लस हैक हो गया, करीम हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, लिंक्डइन हैक हो गया, पढ़ते हो ना? बहुत नॉर्मल से. तो होता है कि 13 मिलियन पासवर्ड्स लिंक्डइन के हैक हो गए, 14 मिलियन फेसबुक के हैक हो गए. पढ़ते हो? क्या करते हो? क्या करते हैं? अपने जल्दी से लॉगिन करके देखते हैं कि हम हैक तो नहीं हो गए. और कोई कुछ करता है? हाँ, एक्चुअली करते पासवर्ड चेंज. करने से तो जनरली होता क्या है कि अगर आपको आया ना लिखा हुआ कि गूगल प्लस हैक हो गया है, सारे पासवर्ड हैक हो गए, या फेसबुक के 50 मिलियन यूजर्स के पासवर्ड हैक हो गए, तो कोई पता नहीं वो 50 मिलियन में तुम और मैं भी हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज लॉग इन. डोंट लॉग इन एंड लॉग आउट. हाँ, मेरा भी काम कर रहा है. हैकर जो है ना वो तुम्हारा पासवर्ड चेंज नहीं करेगा, ताकि हैकर इज द मोस्ट स्टेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. वो आपको शक भी नहीं होने देगा. वो कहेगा अगर मैंने पासवर्ड आपने रख दिया, अनुज का अगर मैंने पासवर्ड चेंज किया तो अनुज को पता चला, तो अनुज का वही पासवर्ड रहेगा और अनुज भी खुश रहेगा मेरा पासवर्ड. लेकिन you should better go out and change, because you never know, you could be part of the and you might get your password. मेरे पास भी कितना रहेगा? वही मेरे पास. Okay. Great. Moving on to another very important aspect. इसके ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की. Right? स्मार्टफोन्स को कॉम्प्रोमाइज करने के बहुत से तरीके, जिनमें से ये कुछ तरीके मेरे ध्यान में थे तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. सबसे पहले आपके पास मैंने जैसे ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज बताई थी ना, इसी तरह स्मार्टफोन में भी वल्नरेबिलिटी, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सिम्बियन हो, चाहे वो Android हो. सबसे पहले आपकी वल्नरेबिलिटी लाई करती है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी जो होती है वो ऐसी होती है जिनको जब एप्पल अपना एज अपडेट करता है तो वो उन वल्नरेबिलिटीज को पाए. होता है ना, लोगों का एज अपडेट होता है, एंड्रॉइड अपडेट्स आती है, तो एंड्रॉइड अपडेट्स को या एज अपडेट्स की ना डिटेल्स पढ़ो ना, तो उन्होंने उसमें सिक्योरिटी बग फिक्स, वो बग को फिक्स कर. पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करते, जिनके पास नॉन PTA प्रूफ आईफोन्स होते हैं, जिनके पास जेल ब्रोकन आईफोन्स होते हैं, जिनके पास रूटेड डिवाइस. यू हैव मैंने थोड़ी देर बाद बताया ना कि रूटेड डिवाइस अच्छी, बट रूटेड डिवाइस ओनली होती है अच्छी जिसको सर नहीं पता. Because you need to put in your security controls. If you have a rooted device with no security controls, you like completely stripped down. तो ये कुछ aspects हैं. फिर malicious application. किसी का malicious application से वास्ता पड़ा? अच्छा, कौन सी? एक गेम की फेक वर्जन. और कोई? अच्छा, कुछ वेल नोन एप्लीकेशन होती है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
कोई ऐप है जो आपको मिल रही है $50 की, कोई ऐप जो अच्छी ऐप, लोकेशन की ऐप है, मैप की ऐप है, कोई ऐसी ऐप है जो आपको इतनी महंगी मिल रही है और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, who would want to spend $200, not $20 की कोई spend, फिर कहाँ से जाके उसको डाउनलोड करते हैं? हाँ, टॉरेंट्स, टॉरेंट्स का नाम सुना है सबने? क्या खूबसूरत है, हर चीज वहां पे मैसेज मिल रही है, वहां पे नहीं मिल रही है, याद रखो, there is no such thing as, because a lot of things on the torrents are man-made. I don't know, did we go through this once कि हम लोगों ने ना आपने टॉरेंट के ऊपर से कुछ फाइलें डाउनलोड कर और उनको डाउनलोड करके ना मैलवेयर एनालिसिस फ्रेमवर्क्स के अंदर डाल, ठीक है? और मैलवेयर एनालिसिस फ्रेमवर्क वो नहीं जो बटन प्रेस करने, कुछ एक्सटेंसिव एडवांस मैलवेयर फ्रेमवर्क, पैरालोग्राम में से किसी का नाम सुना हुआ है, लिनक्स बेस्ड मैलवेयर एनालिसिस फ्रेमवर्क, उसके अंदर डाल के आप फिर दिया फंक्शन करो तो आपको पता चलेगा कि जो आपको सामने चीज नजर आ रही है कि एपीके के तौर पे या एक MP4 फाइल के तौर पे या एक MP3 के फाइल पे या एक मूवी के तौर पे इट कुड बी मैप। इसी तरीके से आपके पास कुछ लेस नोन सोर्सेस थे, जैसे आपने कहा यार मैं इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करता, एंड्रॉइड स्टोर कोई वेबसाइट होती है ना वहां से, ऑलवेज यूज ईदर द एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड ऐप, because they have software security parameters. फिर यूएसबी केबल और रोग एक्सेस पॉइंट अटैक सेट के बारे में बात करता हूँ, पर अगर आपका फोन जो है वो किसी भी तरीके से, इसको मैं फोन स्मार्टफोन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो मैलवेयर से, पासवर्ड बेस या स्पूफिंग बेस से अगर अटैक होता है तो आपकी डिवाइस जो है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एंड देन इट कुड बी यूज्ड फॉर recording conversation, collecting private videos, and it could be stored on malicious servers. And this is actually how easy it is. We've actually done that, right? We've done this. We've done this. I've actually. Some other day, maybe we can have some light sort of a technical session over here. This is so easily achievable. So the objective is not to hack into stuff. The objective is to understand the repercussions so that you can actually go ahead and secure yourself strong. तो ये दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ, इसको क्या कहते हैं, एस्पियराज, दिस इज टाइप ऑफ एस्पियराज। एंग्री बर्ड्स कितने लोग खेलते थे, कहते थे ना, अभी कितने लोगों के फोन में एंग्री बर्ड्स छोड़ के खेलना प्रोफेशनल लाइफ में, एंग्री बर्ड्स के अंदर ना अगर तुम इंस्टॉल करो ना, you get to see that there are so many permissions which Angry Birds does not need. I don't know why is it asking for access to your photos, media, camera, microphone, Wi-Fi. Wi-Fi चलो फिर समझ आता है। Angry Bird में कहीं आपका कैमरा या माइक्रोफोन की एक्सेस होती नहीं थी, मुझे तो नहीं याद पड़ता, पर वो आपसे एक्सेस होता, फोटोज मीडिया से होता। This is where you need to put your foot. You need to understand that why is it asking permissions? Why is it asking permissions? ये आपकी जो किबला डायरेक्शन फाइंडर, किबला डायरेक्शन फाइंडर में अंदर उसे वो सब it was actually asking for so much stuff which I could not relate. But that this was way too much. It's asking me for my phone calls, it's asking me for my system tools, it's asking me for my account details, even my location, GPS. चलो GPS तो समझ आते हैं कि कितना डायरेक्शन निकालिए, but otherwise just look at the kind of things it was asking me for a Qibla direction app. So these are very, very important aspects. You need to understand that if you're installing an application and it is asking for permissions which are beyond comprehension, to stop there and try to understand. क्या आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा permission? करने की जरूरत है, कितने लोगों के पास रहती होगा permission? सारी अपनी गूगल है सबके पास, तो क्या पूछो? Everything on your phone is asking for all those applications and all those permissions, which I believe should not be. तो मेरा मतलब यहाँ पे आपको डराना नहीं है, but आपको aware करना है that you should be aware. So all those a lot of questions that I get from people, जैसा आपने इतनी सारी बातें की तो सोशल मीडिया से बचे नहीं, आपको पता हो कि सोशल मीडिया की repercussions क्या है,
So you are more aware social media user. You just don't share your personally identifiable information on social media. फिर आपके preferences तो friends हैं मुझे कुछ right? It's as you should be aware. You should just understand what you share and what. ये मैं बात already कर चुका हूँ. I've already told you about the fact that there is no free lunch. So people who are using torrent, please trust me, don't. Until unless you are well versed and well aware with the mechanism of identifying malware or malware embedded systems, don't do stuff. Because a lot of them are. I've gone through this research and I've gone through it. I've seen this, right? अच्छा, भाई एयर ट्रैवल करते हो हम लोग? आप लोग तो करते हैं, राइट? तो आप लोग अमूमन एयरपोर्ट्स पे देखते हो कि वहां पे आपके पास यहाँ आपको बस टर्मिनल स्विच लगा होता है, प्लेस पे लगा होता है, स्मार्टफोन केबल होती है, होता है कि नहीं होता? इस्तेमाल करते हैं उसको? कभी इस्तेमाल मत किया। ये नहीं मैं कह रहा कि सब ऐसे ही है, बट ऐसे हो भी सकते हैं, यू नेवर नो। इट्स कॉल्ड द यूएसबी केबल अटैक। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में